Assalamu alaikum, dear students. I'm Mohammad Riaz Khan with the second discussion on the training and developing employees. इस लेक्चर में हम ट्रेनिंग मेथड्स की बात करेंगे कि ट्रेनिंग मेथड्स कौन से हैं जिसके ज़रिए we can impart the skills and knowledge and abilities. So one side it is called on the job training while the another one is off the job training. On the job training वो होती है when employees is in the job, they usually do their daily routine और उस daily routine में उनको ट्रेन किया जा रहा होता है, उनको जो skills impart किए जा रहे होते हैं, जो abilities वो impart की जा रही. इसमें से there are so many methods: mentoring, job rotation, job instruction, training, understudy, apprenticeship, and coaching. Apprenticeship is one of the most commonly used in our uh, country. It is mostly used in tech industry, technological based, technological driven organization, जहाँ पे साथ साथ उन्हें ऑन जॉब जो है स्किल सिखाए जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैकेनिकल अप्रेंटिसशिप है इन टेलीफोन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या मैरीन एकेडमी है या देयर आर सो मेनी अदर्स जिनमें से क्लासेस तो होती हैं लेकिन वो मोस्टली जो है वो ऑन जॉब सीख रहे होते हैं. Similarly, coaching है. Coaching में the person is assigned a senior person who is coaching that person to learn the new skills, abilities, and knowledge required for this changed position or the future position. Mentoring or coaching में it's very thin differences, very thin सी line है. Mentoring में you are doing by your own self much more, and the mentor is only intervene when there is a need. कोचिंग में वो बाकायदा कोच जो वो स्टेप वाइज आपको बता रहा होता है. एंड जॉब रोटेशन इज यूजुअली हैपन व्हेन वी नीड समवन कि हमने उसको फ्यूचर लीडरशिप प्रोग्राम के लिए करना है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के लिए करना है, जिस पे हमारा एक और लेक्चर भी होगा. So to get know about the different departments, so that for that we need the job rotational and job instructional training जो है वो एक बड़ी programmed method होता है. इसके बारे में हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे. And on the other side we have off the job trainings, जिसमें lecture, simulation, vestibular training, case studies, role playing and management games हैं. So on the job training जैसे हमने बात की कि there are some steps. ठीक है जी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग में एक तो ये है दाउ द पर्सन इज ऑन जॉब, ही इज डूइंग हिज ओन वर्क और शी इज डूइंग हिज ओन वर्क. जॉब की ड्यूटीज वो कर रहा है. नाउ वी आर टेलिंग दैट पर्सन कि भाई तुमने नए स्किल्स भी लर्न करनी है, because here we are going to promote you or to give you some other assignment, or we are going to send you somewhere else. So uske liye you need some other skills जो कि अभी तुम्हारे पास नहीं है. And it's usually happening to the new entrants, specifically अगर हम बहुत ज़्यादा specify होकर बात करें तो that is management training officers के लिए. So for that, we have to first prepare the learner that why we are going to deliver this thing to you and why we are aiming to train you, what are the requirements, why we are compelling in doing so. And then present the operation, why, what you are supposed to do in a new way, in the new thoughtful and advanced way. उसमें हम उसे बताते हैं कि भाई ऐसे करना होता है, ये नया काम जो है जो which is required from you, it shall be done in that way. अब उसको पूरा प्रोसेस समझाया जाता है, पूरा ऑपरेशन समझाया जाता है. कैन बी दैट कैन बी आल्सो इन सो मेनी वेज. ठीक है जी, उनको वर्बल इंस्ट्रक्शंस के जरिए बता रहे हैं, बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए करते हैं. एंड देन जब हम उसे बता चुके होते हैं, उसे वो चीज़ understand करा चुके हो, then we ask him to give it a try. Okay, give it a try. Now it's your work. You do it by your own self, and we'll be observing you. Whenever you are doing wrong, we will be saying, don't do that, और हम वहाँ intervene करेंगे.
और फॉलो अप्स ये हैं कि फिर वही चीज़ जो है वो दोबारा भी करानी है और उसका फीडबैक भी लेना। इसके एडवांटेजेस ये हैं, इट्स इनएक्सपेंसिव बड़ा, क्योंकि हमें कोई मजीद ट्रेनिंग एनवायरनमेंट नहीं बनाना पड़ता, देयर इज नो नीड फॉर ट्रेनिंग हॉल्स और समथिंग एल्स, and it's learned by doing. Okay, because when you are doing and you are learning as well, so that is much more retainable or retained as compared to the off-job training जहाँ पे lecturing वगैरह होती है. Or you got immediate feedback when you are doing on-job training. on-job training में वो feedback जो है बड़ा promptly आपके पास आ जाता है कि जी you are doing good or you are doing bad, you are deviating or you are on the track. So ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स में से हमारे पास जो है one is lecturing. So for lecturing there shall be some precautions or some guidelines. The very first thing is that don't start on the wrong foot. Start में आपने जो स्टोरी टेलिंग है या जो कहानी बुननी है, इट शैल बी नॉट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एल्स जो कि ज़्यादा अपीलिंग ना हो, बल्कि rather it shall be, you shall have a good standing about that thing. So you have, if you have start very well, you try to grab the attention of your training, that will be much more effective. So you have to give your listeners signals. Signal means through gestures, through body language, through variation in pitch and frequency of your voice. उसके जरिए आपने लिसनर्स के अटेंशन को ग्रेब करना है, उसको अलर्ट रखना है, जैसे आगे भी है बी अलर्ट टू योर ऑडियंस, तो हर ट्रेनर ने अलर्ट होना है, लेकिन उनको जो चीज़ है इम्पोर्टेंस जब दिलानी है, याद दिलानी है, सो यू कैन यूज द कोटिंग सिग्नल्स कि जी आपने हाथों से बताना है कि भाई these are the important thing. And then the very much important one, be alert to your audience. Is your audience is attentive to you? They are listening to you or not? For that, you have to maintain an eye contact with the audience, because when you are looking into their eyes, their eye brightness will be telling you they are with you or they are not. If they are not with you, then you can use some eye breakers, जहाँ पे will bring back those person to you. And you have to make it sure that where you are delivering your lecture, you must know the acoustics of those that place. What we say कि जो voice है, is it audible to the end person? यहाँ पे बिल्कुल last पे जो बंदा बैठा हुआ है, how is he able or she is able to hear the trainer? And then utilize body languages, because you are, yes, no, the trainers are not only listening to your words, they are observing you as well. So your body gestures is making the skills imparting and transfer, important one, less important one, engaging one, less engaging one. So you have to use the body language, body gestures, hands, walking, turning around, involving them, and all those. And the most important thing that you shall not have be reading a script. Rather, you may have some notes, or you can have a presentation. And when there are points, so आप भी अपने लिमिट्स पे रहें, और आप भी you are going to stick with your topic, and the audience, the trainees are also with you. And then don't have the long sessions. Rather, break the long sessions in the very small talks. And before going to deliver effective lectures, one must have to practice and rehearse the presentation he or she is going to deliver. So जहाँ से possible question बन सकते हैं, वो possible questions जो हैं वो पहले से anticipate करें, और उनकी जो उनके जो possible answer है, that shall be given.
Programmed learning is another method of learning. It's a presenting questions, facts, or problems to the learner, allowing the person to respond and provide feedback on the accuracy of answers. Programmed learning may we put the question, facts, and problems to the learning, then we allow them to reflect upon it, to present their solution, their answers, and then we are starting to give them feedback. It's a sort of, you can say, questions can be a scenario based, कि जहाँ पे हमने एक stick in environment में given situation में उन्हें एक scenario दे दिया है, and then we are asking question and they are giving answers, and through that way we are trying to impart the skills. Okay? It's a teaching method in which information is broken into simple sections on which pupils are able to test themselves. और फिर ना खुद भी पता लगता है while we are giving feedback on their answers and discussing the accuracy of the answers, हम बता रहे होते हैं कि भाई these can be it can be like that, not as you suggested. So it can there are so many types of program learning. For example, interactive multimedia training, virtual reality training, virtual classroom. Our last two parts जो हैं इस पे हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रेनिंग के ज़मन में बड़ी डिटेल में. एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम. यहाँ पे हमने ये नहीं बताना होता कि जी कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करने होते. रादर वी आर पुटिंग क्वेश्चन, सिनेरियो, फैक्ट्स, प्रॉब्लम टू द लर्निंग एंड आस्क दैट पर्सन टू डू इट. And it's a self-paced learning. अब जो बंदा है, if we can give them in an can say on online way, on a recorded one, या सॉफ्टवेयर के बेस पे है, so he or she can have it on his or own pace. और वहाँ पे immediate feedback मिला, the trainee is responding to the questions, to the facts, to the problem. वहाँ पे जो trainer है वो उसको respond करते हैं, feedback देते हैं. And there are reduced risk of error for learner, because जैसे वो error जब हम feedback provide करते हैं, we are critiquing the answers, तो वहाँ पे उसको immediate feedback मिलता है और उसकी वजह से जो error है वो ज़्यादा वक्त नहीं चलते. Internet based training, which is now talk of the town, rather post COVID-19 era में तो सारी training in learning is almost internet based. There are so many types. कुछ पुरानी types है, कुछ नई emerge हो रही. We will be discussing that as well. Internet based training या जो computer based training CBT जिसे आजकल हम modified version है थोड़ा बहुत. It's not purely computer based training. Technically speaking, web-based trainings, WBTs and CBTs की बात है. Computer-based trainings जो होती हैं उसमें course instructor का जो primary mean of delivering the skill या information होता है वह computer होता है. और CBT में से सॉफ्टवेयर के जरिए भी हो सकता है, जैसे हमारे पास different softwares हैं. Another आगे डिस्कशन में हम उसको डिस्कस कर रहे हैं. एजुकेशनल इंट्रानेट के जरिए कर रहे हैं, सिंगल कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं, and so many other ways. As CBTs can be used to teach almost any conceivable subject, but it's especially popular for computer-related studies. Though it was popular for computer-related studies, but now it is being used for almost all disciplines and all trainings as well, in the form of MOOCs, massively open online courses, openware of MIT, openware of the virtual university, of Open University in course era like website. और post COVID-19 scenario में तो online training, lecturing और meeting platforms जो है, it's such in a large amount के हर जो platform है, it start changing to meet the need of the learning and the learner's capacity as well. जो trainees हैं और trainers हैं दोनों के उसमें से. For example, one of the platform is Zoom meetings कहलाते हैं. This is what I was presenting in a conference, a paper of mine recently on July 30th.
The conference was happening in the US, and due to this COVID-19, no one was able to attend the conference physically. So we were having a virtual conference, what we call VIACM. The other type, which is Zoom, Zoom का इस्तेमाल जो है, it is increased by almost 60% during post-COVID-19 era. इसी तरह MS टीम जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ भी और उसके प्रीवियस वर्जन के साथ भी है. इट्स अ न्यू एडिशन, और न्यू एडिशन तो खैर इतना नहीं है, लेकिन इसके जो फीचर्स है, इट स्टार्ट developing in so many ways, or it is mostly used by the educational institutes. ये जो उसमें से ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होते हैं, बस जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और उसके फंक्शंस भी अच्छे हैं. इट इज़ रिलेटेड टू MS स्ट्रीम, जहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं, ट्रेनिंग्स की रिकॉर्डिंग, इफ़ यू डोंट हैव अ प्री रिकॉर्डेड ट्रीट, आपने लाइव देनी है, सो यू can have a recording of this as well, which goes to the MS stream, जो कि YouTube की तरह की सर्विस है, जहाँ पे आपकी वीडियोस पड़े रहते हैं. Zoom is also giving you the same platform, जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग बाद में भी ले सकते हैं, अपने लोकल कंप्यूटर्स पे भी और उनके सर्वर पे भी. Google Meet is evolving as well, and it is shaped so nicely कि जहाँ पे क्लासरूम्स बन रहे हैं, क्लासरूम के ब्रेकआउट्स का भी आ रहा है, अब इसमें मजीद डेवलपमेंट्स हो रही है. Among these, GoToMeeting is the most the oldest one, जहाँ पे मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स ले चुका हूँ back 2011, 12, 13, 14, when there was no such other platforms used for the training purposes. लेकिन Google Meet, Zoom, MS Team, GoToMeeting और ये सारे जो softwares है, ये platforms है, they are providing much more functions and much more attributes, characteristics जो कि बहुत ease ला रहे हैं ट्रेनिंग में, ऑनलाइन ट्रेनिंग के उसमें से. सो आफ्टर दैट, ओके जी, हमने ऑनलाइन भी कर ली है, हमने न्यू एंट्रेंस के लिए ओरिएंटेशन कर ली, उनके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कर दी. बट व्हाट वी हैव टू डू विद दोस पर्सन जिसको हमने अपने साथ कंटिन्यू रखना है. सो फॉर दैट वी हैव अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट कि भाई each of us shall have a lifelong learning. उसने अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यूअस रखनी है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो रखनी है. सो उसके लिए, and why? Because everyone has to progress in his career. Employer responses to employer learning needs, उसके लिए एम्प्लॉयज को लाइफ लॉन्ग एजुकेशनल और लर्निंग अपॉर्चुनिटी देनी है. इंस्टीट्यूशन ने इंस्टीट्यूटिंग बेसिक स्किल्स एंड लिटरेसी प्रोग्राम, और उसके बाद जो है उनको कंटिन्यूटी में ट्रेनिंग्स देनी है, और उस ट्रेनिंग्स की वजह से हम वी कैन रिलेट इट टू द कंपनसेशन एंड द रिवार्ड्स एज वेल, कि कितने CPD यूनिट्स जो हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के यूनिट्स यू हैव अर्न, और उस अर्निंग के बाद जो है यू कैन बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट कैडर, फॉर द नेक्स्ट पोजीशंस. So for that you have to identify and plan कि किस बंदे ने कब ट्रेनिंग करना, कि क्या क्या ट्रेनिंग उसे चाहिए, लर्निंग एक्टिविटीज पे मैनेज करनी है, and then you have to reflect on your own learning as a trainee, what you have learned, and then you have to apply the learning whenever there is a need, and then you have to share the your learning as well. So that was about the continuous professional development. That was about the continuous professional development, जिसमें से we have to design lifelong learning, और उस lifelong learning को जो है वो हमने connect करना है to the reward system and to the career progression as well. So what to do and how to create or develop our own training program.
तो सबसे पहले तो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करने की जो सबसे पहला काम है, it has to be devising its objective, and these objectives has to be derived from the organizational objectives, goals, and उनसे लेना है। और फिर उसके बाद वी हैव टू मेक कि जिस पोजीशन के लिए हमने लोगों को ट्रेन करना है उसकी एक डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन यूज करनी है, ताकि हमें पता लगे कि कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है टू परफॉर्म दिस पोजीशन। एंड देन टू डेवलप एब्रिवेटेड टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड फॉर्म के जी टास्क जो है हम कैसे एनालिसिस करेंगे उस टास्क का, और उसके लिए फिर हमने उसको स्टेप वाइज करना है। एंड देन आल्सो हैव अ जॉब इंस्ट्रक्शन शीट के क्या क्या जॉब्स जो हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हमने देनी है, सो वहाँ पे टिक मार्किंग वगैरह हो। एंड देन वी हैव टू कंप्लीट कंपाइल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द जॉब। और फिर हमने वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डेवलप कर लिया है उसको आखिरी फाइनल टचेस देके कंपाइल एक प्रोग्राम की सूरत में लेकर आना है। सो इट स्टार्ट विद द devising objective and align those objectives with the organizational objective, then looking into the detailed job description, and then having an task analysis regard जहाँ पे पता हो कि कौन से जो टास्क है वो करने हैं, and then a job instruction sheet develop करनी है कि कौन कौन सी instructions required है इस job को perform करने के लिए, and at the end we shall have a complete training program for the job. So that was all about creating our own training program. So in this lecture we have discussed that what are the training methods, जिसमें से on the job training methods भी की बात हमने की, off the job में भी बात की, और off the job में हमने lectures पे ज़्यादा focus किया। उसके साथ continuous professional development की बात की, और end पे कि how to design our own training program. So that was all for today. Thank you.